and today I would like to inform you about the very important application of solar energy. Before starting my session, I am assuming that you are very well aware of the different type of energies, that is renewable or non-renewable energies, and the importance of renewable energy, you can say. And in that, I also assuming that you are having some brief introduction of the electromagnetic radiations and its characteristics. Okay, so with that I will tell you some objectives of my session. After the session, you will be able to explain the various types of radiations. After that, we will see the different components that will require for the solar water heater. Okay, and then its a working principle, on which principle it works. In the end, we will see the working, that how it works. Okay, so let's start. So if I ask a question to all of you, what can emit radiation in an environment? क्या बोलोगे आप कि हर एक चीज emit करती है या कोई high temperature body emit करती है? कौन emit कर सकता है radiation? Anybody? जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो emit कर सकता है. Yes, good. मतलब जनरली इमेज होती है कि भाई हाई टेम्परेचर है तभी वो रेडिएट करे. नहीं, हर चीज आपके एनवायरनमेंट, इवन आप इस कमरे को ले लीजिए, आपकी टेबल, आपकी फैन, everything, whole, everything, even yourself, means human being, also radiate energies. That if a body having some temperature, it will definitely radiate. Okay, so with the view, so the type of radiations depends upon the temperature of the body. Means you cannot say that each type of body is radiating same type of radiation. You cannot say like that. Okay, the type of radiations emitted by a body depends upon the temperature of that body. Okay, कितना टेम्परेचर है तो किस टाइप की रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं. Okay, so to explain that, there is a law which relates the wavelength of an electromagnetic wave with the temperature, and it states that the product of the wavelengths emitted by a particular body and its temperature will remain the constant. And this law is called as Wein's displacement law. Wein's displacement law. So from this law, what can you conclude? The low, it means the low temperature bodies will emit more wavelength radiation, and the low temperature body will emit short wavelength. Okay, so I have noted. I have taken the examples of two bodies that is having a very high temperature, that is your sun, very high temperature, and just consider another example, that is of Earth, which is having low temperature as compared to sun. So type of radiations emitted by the sun, just compare the wavelengths, that is in micrometer, which is measured on x-axis, that is 0.5 micrometer, 1 micrometer, etc. Compare it with the electromagnetic radiations emitted by the Earth, that is 5, 10 micrometer. And you can also compare the intensity of radiations. Intensity of radiation means energy per unit area, means energy falling per unit area. Okay, energy per falling per unit area means the low wave radiations will give high intensity of radiations, and the long wave radiations will give low intensity of radiations. Okay, so next. Now coming to the applications of solar energy, you can utilize the energy of the radiations that is coming from the sun in two forms. Okay, what can you think? Can you think that the radiations coming from the sun is having what type of energy? Okay, they are having some energy that is travel through the radiation mode. Radiation mode, that's why we are calling it as radiations. It means electromagnetic radiations. Now you can utilize that energy by converting it into heat. That will use in thermal applications. You can convert it into heat. Okay, डायरेक्टली अगर आप देखें तो रेडिएशंस आती है वो डायरेक्टली हीट फील नहीं करती है. जब कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो हीट में कन्वर्ट होती है. डायरेक्टली उनके पास हीट नहीं होती है. समझ रहे हो ना हीट में. उसके बाद देखिए यू कैन कन्वर्ट द radiation energy directly into electricity without converting into heat,
without converting into heat directly using that using photovoltaic cells. Okay, you will semiconductor that will convert the radiation energy directly into electricity, and here the we will convert it into heat. So the application is solar water heater, dryer. इनमें से जो हमें डिस्कस करना है कि सोलर वाटर हीटर. I will discuss one particular application of the solar energy in thermal applications. Okay, so what are the solar water heaters is? What can be different components? Means one is सबसे पहले जरूरत क्या है? एनर्जी आ रही है, ठीक है? बहुत मतलब उसको हमें कलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर. फिर उसको कलेक्ट करके उसके बाद क्या करना है? उसको हीट में कन्वर्ट करना है, और फिर इस हीट को हम लेके जाएंगे दूसरी जगह पर जहां पर आपको किसी चीज को गर्म करना है, ठीक ना, यूज करना है. ओके, सो जो सन से जो रेडिएशन एनर्जी आ रही है, मींस एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम रेडिएशंस, यू हैव टू कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ अ सोलर पैनल, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू हीट. ओके, एंड आफ्टर दैट fluid that is flowing through a circuit which will pass through solar panel will absorb the heat in this and will stored in a tank. You cannot use the hot water directly. अब डायरेक्टली इसको यूज नहीं करोगे, भाई कभी-कभी जरूरत पड़ती है, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, उसको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी. ओके, तो आप यहां से लेकर आके इसको स्टोर कर लोगे, ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है आप इसको यूज कर सकते हो. सो यहां पर कंपोनेंट्स क्या क्या थे अपने? एक तो स्टोरेज टैंक हो गया, दूसरा सोलर पैनल. फर्स्ट इज सोलर पैनल जिसको हम एनर्जी कलेक्ट करके कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्टोरेज टैंक, और एक और चीज हम कर सकते हैं पंप. टू फ्लो द फ्लूइड इन द सर्किट यू विल रिक्वायर पंप. पंप की जरूरत पड़ सकती है. तो ये दो या तीन एलिमेंट्स. कई बार पंप की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें, ठीक है. पंप कई बार जरूरत पड़ती है जब हम फोर्स कन्वेक्शन की बात करें, जब हमें हाई हाइट पर लेके जाना है. सो उसमें जो हम यदि बात करते हैं आपका सोलर पैनल, इट इज द मेन पावर हाउस ऑफ द सेल. Then say it is the main power house which is converting radiation energy into heat energy. इसका जो फंक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी. It will consist of a water glass cover का बना होगा. Glass cover, उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्यूब्स हैं. These are mainly made of copper. Okay, and there is an absorber plate which is generally colored with the black color से, क्योंकि आपको पता ही है कि आप पढ़ के ब्लैक कलर की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इट इज द हाईएस्ट. ओके, तो हम इसको ब्लैक कलर कर देते हैं. ब्लैक कलर करने के बाद जो रेडिएशंस आती हैं ग्लास कवर से पास होती है, इसके ऊपर एब्जॉर्ब होती है. वाटर दैट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. आई एम शोइंग द क्रॉस सेक्शन हियर. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब्स. तो वाटर जो फ्लो कर रहा है हीट लेगा और चला जाएगा, ठीक है. मेन फंक्शन यहां पर किसका है? सोलर पैनल का. सो नेक्स्ट, तो सोलर पैनल किस उस पे काम करता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? there is a property of the glass that it can pass the short wave radiations but it can't pass the long wave radiations. Okay, so short wave radiation that is coming from the high temperature bodies, that is earth. Okay, it can pass easily, ठीक है. उसके बाद दूसरी साइड क्या होगी? एब्जॉर्बर प्लेट है. Which temperature is low, it can emit long wave radiations which is opaque to the, which cannot pass outside from the glass and they will be reflected back. तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन फंक्शन यहाँ पर कौन कर रहा है? ग्लास कर रहा है ना. इट कैन पास द रेडिएशंस, इट कैन नॉट दोबारा उसको पास नहीं कर सकता. तो रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक होगी, इस एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगी, ट्यूब्स जा रही हैं, एनर्जी विल गेट एंड ट्रांसफर टू द फ्लूइड. ओके, सो सोलर वाटर हीटर की इंस्टॉलेशन की बात करें, कौन-कौन से एलिमेंट्स इसकी तरफ बता सकते हो? ये ऊपर क्या कहते हैं जो रूफ के ऊपर आपने जनरली देखे होंगे, ठीक है ना, क्या होते हैं? सोलर पैनल्स. सोलर पैनल्स के अंदर वही सारी चीजें, ग्लास कवर, एब्जॉर्बर प्लेट, ट्यूब्स जो मैंने बताया था, ठीक है. और नीचे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं. यहाँ पर एक पंप लगा है, ठीक है. कंट्रोल के लिए कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है. एक स्टोरेज टैंक है. एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी डिवाइस? ऑक्सिलरी हीटिंग. इट मींस समटाइम लेकिन की डिसएडवांटेज मेनली ये है कि इनका जो टेंपरेचर राइज इट इज नॉट वेरी मच हाई. इट मींस अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस. Sometimes the requirement will be more. So auxiliary device is required. Okay, auxiliary device means for heating, to raise the temperature to your satisfaction. जैसे आपको चाहिए उसका temperature rise करने के लिए जरूरत पड़ती है. How it works? बता सकते हो? Yes. Low जो temperature है, low temperature water है, it will pass to the solar panel with the help of pump. Okay, it will be heated up with the help of on the principle of greenhouse effect.
it will be heated up and will again pass to the storage tank. ठीक है, यहाँ पर देखिए मिक्सिंग नहीं होगी, क्यों? It is cold water, it is कुछ मिक्सिंग होगी यहाँ पर, ठीक है ना, बट जनरली हम जो हॉट वाटर है वो ऊपर से निकाल लेते हैं और you can use for further application. So the limitations, as I have told you, it cannot work in the night. Next, high temperature applications means very high temperature auxiliary devices जरूरत पड़ेगी. And the last one, यदि आपको higher large installation लगाना है तो वहाँ पर AVA requirement solar panel निकालने के लिए ज़्यादा पड़ेगी. Okay, next. Conclusions हमने क्या निकाले? Electromagnetic radiations की फॉर्म में अपने पास एनर्जी है. We can convert that electromagnetic radiations energy into heat or you can convert into that into electricity. Okay, so and this जो हमने solar water heater देखा, इसने क्या कन्वर्ट किया? इसमें कन्वर्ट किया, heat में कन्वर्ट किया. ठीक है? Heat में कन्वर्ट किया. तो और this heat can be utilized for different domestic and industrial applications. ठीक है? Next. So assignment that we will discuss कि अलग-अलग टाइप के सोलर वाटर हीटर अपने पास हो सकते हैं. इन कितने टाइप के हो सकते हैं? अलग-अलग टाइप से. जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पर. कौन सा डिस्कस किया है? सिंपल फ्लैट प्लेट कनेक्टर. आपने देखा होगा जो टॉपिक देखा उस पे लिखा था फ्लैट प्लेट कनेक्टर. इट मींस द सोलर पैनल दैट इज यूज्ड वाज फ्लैट, मींस स्ट्रेट अवे टू. समटाइम्स क्या होता है, ये फ्लैट प्लेट की जगह कई बार हम कर्व लेते हैं, कॉनकेव टाइप. ठीक है ना, कॉनकेव टाइप भी ले सकते हैं ताकि एनर्जी जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है क्या हो, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो पाए. ठीक है, तो इस टाइप की आप असाइनमेंट बना सकते हैं. कितने कितने टाइप्स के अपने पास सोलर वाटर हीटर हो सकते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री. आफ्टर दैट what can be the angle of inclination for the solar panel? कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है किस चीज पे. सन की पोजीशन. अच्छा, सन तो पूरा दिन चेंज मतलब पोजीशन चेंज करेगा, तो क्या हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे? हम तो नहीं करते. नॉर्मल एप्लीकेशंस में नहीं करते. देखिए मैंने टाइप्स बताया. टाइप्स मतलब कंसंट्रेटिंग टाइप और कॉनकेव टाइप. इसकी पोजीशन इसको ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट कनेक्टर यू कैन नॉट ट्रैक द डायरेक्शन ऑफ द सन. यू कैन कांट ट्रैक, नहीं कर सकते. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल हम लेते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देख सकते हैं कि मतलब इसका क्यों ये पर्टिकुलर एंगल लिया जाता है, क्योंकि जो इसका जो जनरली जो इसको इंस्टॉल किया जाता है, इट इज इंस्टॉल्ड विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, which we can see in detail in the further classes. Okay, and you can also thank you.